बेंगलुरु के अल-अमीन कैंपस में वुमेन्स डे का जश्न, इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेशन, आलमी यौम ख़वातीन का जश्न, वुमेन्स पावर, वुमेन्स अचीवमेंट्स, वुमेन्स टैलेंट, वुमेन्स स्ट्रगल को रिकॉग्नाइज करने, समझने और सेलिब्रेट करने का खुशनुमा मंजर। जी हाँ दोस्तों, अल-अमीन एजुकेशनल सोसाइटी के चेयरमैन उमर इस्माइल खान की लीडरशिप में वुमेन्स डे शानदार पैमाने पर मनाया गया। अल-अमीन एजुकेशनल सोसाइटी ने 4 ऐसी खवातीन को फेलिसिटेट किया जो अलग अलग फील्ड में अपना मकाम बना चुकी हैं, अपनी पहचान बना चुकी हैं। और ये 4 मुस्लिम खवातीन तमाम खवातीन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए रोल मॉडल हैं, इंस्पिरेशन का जरिया हैं। IPS ऑफिसर बेंगलुरु साउथ ईस्ट DCP सारा फातिमा, KS ऑफिसर टुमकुर यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार नाहिदा जमजम, रिपब्लिक ऑफ तुनिसिया की काउंसिल शबीना सुल्ताना और बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज की डीन और डायरेक्टर डॉक्टर आसिमा बानो, ये 4 खवातीन वुमेन्स डे की तकरीब में जलवा अफरोज थीं। अल-अमीन एजुकेशनल सोसाइटी ने इन खवातीन की खिदमात को, इनकी सर्विसेज को रिकॉग्नाइज करते हुए तहनीत पेश की, खिराजे तहसीन पेश किया। दोस्तों, ये 4 मुस्लिम खवातीन ने साबित किया है कि हर तरह की रुकावट, कठिनाइयों का सामना करते हुए आला से आला मकाम तक न सिर्फ मर्द हजरात बल्कि खवातीन भी पहुंच सकती हैं। अहले हिम्मत मंजिले मकसूद तक आ भी गए, अहले हिम्मत मंजिले मकसूद तक आ भी गए, बंदे तकदीर किस्मत का गिला करते रहे। इन 4 खवातीन ने अपनी अपनी फील्ड में अपना मकाम बनाया है, अपनी पहचान बनाई है और इनकी जिंदगी और तजुर्बा दूसरों के लिए मशाले राह है, इंस्पायरेशन है। इस मौके पर अल-अमीन एजुकेशनल सोसाइटी के चेयरमैन उमर इस्माइल खान ने कहा कि ये खवातीन अफसरान तमाम खवातीन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए रोल मॉडल हैं। घरेलू जिम्मेदारियों के साथ साथ खवातीन एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, मेडिकल, इंजीनियरिंग हर शोबे में आला से आला मकाम हासिल कर सकती हैं और बड़ी सी बड़ी जिम्मेदारियों को बखूबी तौर पर अदा कर सकती हैं। इस मौके पर अल-अमीन एजुकेशनल सोसाइटी के सेक्रेटरी जुबैर अनवर सेठ व दीगर मौजूद रहे। इस वुमेन्स डे सेलिब्रेशंस की एक और ख़ास बात ये रही कि अल-अमीन के इस स्टेज पर 2 महिला प्रिंसिपल मौजूद रहीं। जी हाँ, अल-अमीन एजुकेशनल सोसाइटी की 2 मशहूर प्रिंसिपल्स यहाँ मौजूद रहीं, डॉक्टर अनुराधा और डॉक्टर HR सुधा, जो 2 अलग अलग कॉलेजों की प्रिंसिपल हैं, यहाँ मौजूद रहीं। और ये इस बात का सबूत है कि अल-अमीन एजुकेशनल सोसाइटी हर सतह पर खवातीन को, वुमेन्स को एनकरेज करती हुई आ रही है और टीचिंग फील्ड में भी महिलाएं प्रिंसिपल की जिम्मेदारी भी बखूबी तौर पर अंजाम दे सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं इस खूबसूरत तकरीब का, इस खूबसूरत प्रोग्राम का क्या पैगाम रहा। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम प्रकार इನ್ನು 131 इयर्स आगुत्ते विमेन अंडर जेंडर पैरिटी बरोदक्के। मैडम, अल-अमीन में आप आए हैं और यहाँ पर वुमेन्स डे मनाया गया है, क्या मैसेज रहेगा और ख़ास तौर पर माइनॉरिटीज़, मुस्लिम वुमेन्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन मेरी बहनों के लिए एक ही मैसेज है, अच्छा पढ़िए, कौम के लिए काम कीजिए, आगे बढ़िए। कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है, कर सकते हैं, करिए, आगे बढ़िए, पढ़िए। पुलिस शोबे में भी आना चाहिए जी, वही तो मैंने मैसेज दिया कि आज हमारा पुलिस डिपार्टमेंट पहले जैसा नहीं रहा है, ज़्यादातर लड़कियों को ले रहे हैं, उन लोगों को भी आजमाना चाहिए, लिखना चाहिए, एग्ज़ाम्स आना चाहिए। अल-अमीन सोसाइटी के बारे में क्या कहना चाहिए? It's one of the premier institutes. They have given platform to many of them, including my DG CAD was also one of the alumni of this institute. तो इस पहली बार आप आई हैं? या जी, पहली बार। थैंक यू।
आपने अपनी ज़िंदगी में मकाम हासिल किया, तो आपके तजुर्बे की रोशनी में क्या पैगाम आप देना चाहें? एक तो हम हासिल नहीं करते, ऊपर वाला देता है, ये तो है। मगर पढ़ो, आगे बढ़ो, एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। घर से बाहर निकलो और पढ़ के कुछ भी करना चाहो तो एक एम या गोल रख के आगे बढ़ो। तो कहाँ रुकावट कहाँ महसूस हो रही है आपको लड़कियों के लिए? क्यों जो है दूसरे समाज के मुकाबले कौम की लड़कियाँ क्यों पीछे नज़र आती हैं? मेरे को पीछे नज़र नहीं आती। हाँ। हमारे फील्ड में तो बहुत ज़्यादा लड़कियाँ हैं। हाँ। हेल्थ केयर में तो ऐसी बात है नहीं, पहले होती होगी। अभी तो काफ़ी लड़कियाँ आगे बढ़ के पढ़ रही हैं, बहुत अच्छे मकामों पे हैं। तो इंशाल्लाह हेल्थ केयर में लेडीज़ बहुत हैं। तो कैसे जिम्मेदारी कैसे अदा हो सकती है वहाँ पर? लड़कियों के लिए कुछ प्रॉब्लम है या कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ। अच्छा पढ़ो और अच्छा हो, अच्छा काम करें और आपके पेशेंट्स आपसे खुश हैं तो कोई रुकावट ही नहीं आ सकती। तो हेल्थ केयर में आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए। हेल्थ केयर में डॉक्टर्स है, एलाइड साइंसेस हैं, नर्सिंग प्रोफेशन है, तो यहाँ पे बहुत शॉर्टेज है। तो प्लीज़ एंटर इनटू हेल्थ केयर। तो अल-अमीन ने आज ये सेलिब्रेशन किया है, तो इस बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? बड़ा अच्छा फंक्शन था एंड ब्लेस्ड, इतने लोगों के साथ मैं सारा मैडम एंड ऑल इनको मिली एंड वेरी गुड फन। बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। आलमी यौम ख़वातीन मनाया गया है अल-अमीन कैंपस में, तो क्या पैगाम रहेगा ख़वातीन का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल-अमीन में इंटरनेशनल वुमेंस डे का प्रोग्राम मनाया गया है। तो 4 मुस्लिम औरतें जो उनके फील्ड में एक्सेल किए हैं और हमारा कौम के लिए, कौम के बच्चों के लिए एक मोटिवेशन है, उनको दावत दी गई और उन्हें आके अपने जो है लाइफ का जो एक्सपीरियंस है वो सबसे शेयर करें। उसमें DCP सारा फातिमा मैम, हमारे बैंगलोर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर आसिया मैम और असमा मैम और दूसरे हमारे टुमकुर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार और हमारे काउंसिल ऑफ टूनिसिया, ये 4 लोग आए थे। तो बच्चों से बच्चे बहुत इंस्पायर हुए और उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं और बच्चों को मोटिवेट किए कि आप भी हमारे जैसे बन सकते हैं। हार्ड वर्क, डेडिकेशन, डिसिप्लिन से जो है आप भी हमारे जैसे बन सकते हैं और कौम की खिदमत अच्छे पोस्ट में आके कर सकते हैं। ये आज हमारा मैसेज आज हमारे बच्चों को यहाँ से था। ख़वातीन को किस तरह आप एनकरेज करें सर अल-अमीन सोसाइटी में? हमारे अल-अमीन में लॉ कॉलेज में, फार्मेसी में, BCom, BBA, BCA में सब जो है बच्चे अच्छे मार्क्स से पास हो रहे हैं, डिग्री लेकर पास हो रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन उनको आगे बढ़ने के लिए एक डायरेक्शन नहीं था कि आगे क्या कोर्स करना है, क्या पढ़ना है, जो गवर्नमेंट सर्विस में जाना है या प्राइवेट में करना है या पुलिस में जाना है, IAS IPS करना है। ये जो है आज ये जो प्रोग्राम हुआ, इससे बच्चों को ये सब इन्फॉर्मेशन मिला है। तो बच्चों को हम मोटिवेट करते हैं। हम भी चाहते हैं कि अल-अमीन के बच्चे हर जगह हों और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से अल-अमीन से निकलें और जाके कौम की खिदमत करें, अच्छे गवर्नमेंट पोस्ट में आके या प्राइवेट में ऐसे खिदमत करने का उनको एक जज्बा चाहिए। ये ऐसे प्रोग्राम से ऐसे जज्बा मिलता है। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। ಬಟ್ ವಿಮೆನ್ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ವಿಮೆನ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ PhD ಲೆವೆಲ್ ವರೆಗೂ ವಿಮೆನ್ ಯಾರನ್ನು ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಕೂರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ 27% ವಿಮೆನ್ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಕೋರ್ಸ್ ಏನ್ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಬರ್ತ್ ಟು ದರ್ ಚೈಲ್ಡ್. ಓನ್ಲಿ 27% ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್. GDP ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಓನ್ಲಿ 17 to 18%. ಅನುವಾದ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ GDP ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ 18% ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ವಿಮೆನ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕರ್. ಮದರ್ ನೆವರ್ ರಿಟೈರ್ಸ್. ತಾಯಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲ, 24/7 ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ. ಆ ವರ್ಕ್ಗೆಲ್ಲ ಏನು ಎಕನಾಮಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ನಾವು GST ಇದರಲ್ಲಿ GDP ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ? ವಿಮೆನ್ ವರ್ಕ್ಗೆ ಕೇರ್ ಎಕಾನಮಿ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ವಿಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಪಾಸ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ಡಿಗ್ರಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಮದರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಅವರಂತೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲಸ, ನಮ್ಗಿನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಡೇ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಲಿ ಸೆಹರಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಫ್ತಾರಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಎದ್ದೋಸೋದು ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಶಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೇನಿಂಗ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇದನ್ನ. ವಿಮೆನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡು ಎನಿಥಿಂಗ್ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮಾಡಿ 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 ಇದೊಂಥರ ವಿಷಯ ಸೈಕಲ್ ಇದೆ. ಆ ಗಿಲ್ಟಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಲೇಡೀಸ್ ಯಾರೋ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಮದರ್ ಗಿಲ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ
ಏನೇ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮಗುಗೆ ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮಗು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆ ಗಿಲ್ಟಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ವಿಮೆನ್ ಇಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕರ್. ಆಮೇಲೆ ನಾವು 100% ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅಲ್ಲಿ 100%, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ 100% ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೊಸೈಟಿ ಬಿಡಲ್ಲ ನಮಗೆ. Out their thoughts, how important, how integral a woman is to the society. In fact, to begin with our own religion, Islam has placed and given equal status to women. Not only the status, but they've said it has to be to the extent of equal education, because having equal obligation to education is an Islamic right. They've also spoken about equal status in work and equal status to have or own your own business. Apart from that, it also says the leadership roles that the woman carries today is not existing today but from times immemorial. Belonging to a conservative Muslim family, it was difficult to convince my parents to be where I am today, because though my father always inspired and always nourished that equal education, equal right needs to be given to a woman child, he said it is about the education which creates the difference. To when you are educating a man, you are educating an individual. But when you are actually educating a woman, you are not only educating the family, but the community and the society at large. So my father always wanted me to become a doctor and serve the community. So we always have these tiffs between each other. Why a doctor? Should only a doctor be serving the community? Even I want to be an administrator, a leader like you. Why can't I be as such? He said, you're a woman, right? I am very possessive and protective about you. I said, nothing doing. Give me the bait and let me show you. I can protect myself. Let me be my own army, and I can lead the army. And you just pray and give me your blessings, shower me your blessings. And that's what we've been doing today. And we are a family of 8 boys. I'm the eldest, and I have only one brother who's after me, like next to me, just a junior to me. Having said that, my mother, my role model, she's the Warren Buffett of the family. Her business acumen is just immense, and I look up to her for everything. Even at the age of 80, Alhamdulillah, she is strong and a very beautiful lady. I just happened to meet her some time ago and told her that I'm going to celebrate a birthday at Al-Amin campus, and she felt very happy about it. Today I convey my best wishes and duas to our First Lady, Mrs. Founder, Mrs. Dr. Mumtaz Ahmad Khan Sahib, and pray for her good health. Well, we men think we are the leaders, but if we really go to think, the women lead, we follow. When we work we are very hard working, we men are very hard working. We work for 12 hours a day and say, oh yes, we worked very hard. But, well, all women here, let me acknowledge the fact that you women are not just harder, but the hardest working among mankind. You work 24 hours a day. And it is our duty to acknowledge the fact that without you, we are no one. This morning, I was just going through my day's schedule. When I woke up at 4 o'clock, my sahri was ready at 4:15. I was just seeing that everything that goes around my place. Students, this is the best that we could have ever done for your motivation. Each distinguished lady on the stage has achieved a great milestone in their respective fields. You have heard all of them and listened to their life experience. With hard work, dedication, discipline and patience, you too can achieve your goals. A few points that I picked up from the speeches that we heard today.
Mrs. DCP Sara Fatima Madam, very inspirational speech from all the students. I am sure all those present here will remember your words for a long time. Ms. Nahida Samzam Madam, you have analyzed the position of women in society very well and explained it very well and made us all think of the situation that women are in today. Of course, we too have, as you said about the sanitary issues, we have sanitary vending machines and sanitary pad incinerators in our campus for students. Ms. Shabina Sultana, who is the daughter of CM Ibrahim Sahab, a very nice speech and very well articulated. Dr. Rasim Abanu, lovely speech in a very casual way, and you have achieved a lot and you're very simple and very happy for that. Bangalore Medical College is the dream college for all students in Karnataka and all over India. To get into Bangalore Medical College is a very great milestone, and you are heading that medical college. We are also proud of that, proud of you. Thank you so much. And you have spoken about the power of women in adverse situations. Also, I appreciate the audience who have sat so quietly and attentively listened to every word they have said. Thank you, audience. For me personally, I would say three things that work in my life. This is for all of you, all the students, etc. First is faith in God. That is what has been drilled into us from our childhood. Immense faith in God and regular prayers. I don't remember a time when we have missed a prayer. Anytime we miss, we read it later. So probably from whenever I've been 15, 16, I don't think I've missed any prayer. So that is how we are regulars in prayer and faith in God. Obedience and service to parents. This is what I think one of the way of my achievement is obedience and service to parents. That's what I've been doing. And sabr, as Allah says, have patience, sabr. We need to have a lot of sabr. Any adverse situation, have patience. It will pass in whatever level, whether at home, institution, society. Bad situations will pass, and you have to be strong and face adverse situations, and you will succeed. And lastly, of course, good character. Good character is very important. The world might seem good to be dishonest, or whatever, but it's good character that lasts and will make you the winner. So all these things are very important for your life. If I had faltered in any of these, I think I would not be here. A few points before I wind up. There is a lot of positivity in this country, so don't read the newspapers and feel negative. Every day in the newspapers we see some politician, somebody has come up some bad remark and we feel disheartened. There's a lot of positivity. We have a huge population and especially Muslims, so don't feel disheartened by any kind of political discourse or anything like that. Be positive, and there is a lot of good things happening in the country as well. The world is run by God. God's government prevails. Follow the rules that are laid down by God at all times and you will be successful. Go with the first thought. Whenever you get a positive thought, that is the first thought that you should go with. The thought that follows immediately is a negative thought. Say you got up to read prayer, when you got a thought to read prayer, as you're getting up, a second thought comes, go after some time. There is more time. This is a negative thought in all walks of life. So always go with the first thought and you will be successful. God loves those who are humble and hates those who are arrogant. Whenever you achieve anything or anybody praises you or feel proud of yourself, immediately you should read, MashaAllah, la quwwata illa billah. This is a story of in Surah Kahf, when there were two farmers and they had lovely vineyards, and one story ends immediately when he said one had a vineyard and he was thankful to God. His story ends. Then the story goes to the second man who had a lovely vineyard, but he said it was all because of me that I have achieved this. So Allah sent three punishments. First he dropped the water table, so there was no water to reach the trees, and then he made the soil clay, so how much ever he tried to water it, the water wouldn't go inside. Then it dried up, one stroke of lightning, and the entire thousands of acres of vineyard were destroyed completely, and he became a poor man. And then the Quran says, if only he had said, MashaAllah, la quwwata billah, all this will not have happened. So anytime you feel proud of yourself for any achievement, anything, in your heart immediately, when you think you feel looking good, you are in a nice place, you're going in a nice car, whatever you feel, whenever you feel proud of yourself, even for a second, you must read, MashaAllah, la quwwata illa billah, Allah will protect you and give you more. Whenever you feel depressed and you feel
more problems in the world and you feel that you are the one having a lot of problems, Allah has said in the Quran again, in Surah Duha, the last line, وَنِيمَةَ وَرَبِّكَ فَحَدِّثْ. That means, say out loud your blessings. So when you say, yes, you feel you have a lot of problems and kind of depression kind of thing, then you must say, Allah has given me parents, a house to stay in, food to eat, healthy body, and all these things. Say it aloud. Allah says, when you are in depression, say out your blessings aloud, and then this is the cure for depression. So don't feel depressed any of you all when you have bad things. There are a lot of good things in your life. Small, maybe some difficulty here and there, but there are the blessings outnumber the difficulties. The first attack of Iblis is to attack. The first attack in the Quran, the Iblis says, the first attack that I make on a human is to make him ungrateful. I will attack him from front, side, from top, from below, and the result of that is going to be ungrateful. Again, Allah replies in the Quran, for those who are ungrateful, for those who are grateful, I will increase, and for those who are ungrateful, there is a painful punishment. Okay, so the punishment for not being grateful is not anything mild. It is a very hard punishment. So always try to be grateful to God. Always say Alhamdulillah in whatever situation. Alhamdulillah, Alhamdulillah. This way God will increase your blessings. Then again, first take care of yourself, then your immediate family, and then society. Especially women, please exercise, eat a good diet, and take care of yourself. If you take care of yourself and you are physically strong, mentally strong, then you can take care of your family and society. So generally women neglect their health. You shouldn't be doing that. Lastly, I would thank Dr. Anuradha for organizing such a good event and getting such distinguished guests for us. I would thank all the distinguished guests for taking off time from the busy schedule and attending today's program. Thank you everyone. With your smile, the way you have always done. Happy Women's Day. To all the incredible women out here, shine on, not just today, but every day. Your strength, courage, and grace inspire all of us every day. Good afternoon, everyone present here. Respected dignitaries on the dais and off the dais. Today is International Women's Day, and it has been a great honor to be a part of this wonderful event. Today is International Women's Day, and we should all take time to stop and thank the ladies in our lives, however you identify them, women who have shaped you. This is my thanks to all the females who have appeared in this particular function and also in our lives. I'm glad to stand here to express my vote of thanks to all the great, cheerful ladies here. I thank strong, intelligent, talented, and simply wonderful women. Don't ever forget that you are loved and appreciated. Women is like a tea bag. Basically, we wanted to identify women achievers who can be an inspiration for the community in particular and women in general. So we identified 4 women, one Madam Sara Fatima, and she's a DCP, an IPS officer, and the second person was Nahida Jamjam. She is a KS officer who is presently the registrar of Tumkur University. We also invited Shabina Sultana Madam. She is the daughter of CM Ibrahim sir, and she is the honorary consul for the Republic of Tunisia, North Africa, from Bangalore. And the 4th person we invited was Dr. Asima Banu. She is the Dean and Director of Bangalore Medical College. So 4 inspirational women were selected to be felicitated on the International Women's Day, and they have given a message to all the women that there is to be accelerating action on the scale of gender equality. And they have said women need to stand up for their rights, and they also gave a message that men need to respect women, and the women need to raise their voice against all the atrocities and violence against women. Ultimately, there is nothing to do with who is superior, whether it is man or woman, but both are equally interdependent on each other and they need to coexist. So men need to respect women, women need to respect men. So that is the message. Thank you.